Namo Namaha everyone, Suprabhata. Welcome to the Sanskrit Express channel. Standard 8 Sanskrit Sampurna Sayukta Dvitiyaha Patah Kah Ka Kim. Today we are going to see Dvitiyaha Patah Kah Ka Kim Pratamaha Ghatakah. द्विपूर्णांक 1 एषः सः एषः असीमः एषः means this is असीम एषः चलति he walks कः चलति who walks एषः असीमः चलति this असीम walks सः प्रसादः सः means that is प्रसाद सः धावति he runs कः धावति who runs सः प्रसादः धावति that प्रसाद runs. Let us see the more example. एषः योगेशः एषः means this is योगेश एषः धावति he runs कः धावति who runs एषः योगेशः धावति this योगेश runs. सः अर्जुनः सः means so that is अर्जुन सः गच्छति he goes कः गच्छति who goes सः अर्जुनः गच्छति that अर्जुन goes. मेघः वर्षति cloud showering lion roaring सिंहः गर्जति lion roaring. Now let us make sentences. कृतिः छात्राः मञ्जुषा द्वयस्य सहायेन वाक्यानि वदन्ति. Students should speak with the help of two box or shouldn't make sentences with the help of two box. The one box is subject, that is karta. The word is chhatrah means student. Girishah the name of boy. Sivah lion. Mayurah peacock. Kakah means crow. Gajah means elephant. Mushakah means rat. Shunakah means dog. Shukah means parrot. Shikshakah means teacher. Balakah means child. Ashwah means horse. Markatah means monkey. And the second box is verbs, that is Kriyapad. Patati read, Gachati goes, Agachati means come, Likhati means write, Khadati eat, Upavishati sat, Uttishtati stand, Pibati drink, Pashyati see, Nrutyati dance, Khelati play, Gayati sing, Namati to salute, Utpatati jump, Vadati speak. So let us make sentences. छात्रः पठति गिरीशः गच्छति सिंहः आगच्छति मयूरः नृत्यति काकः खादति गजः पीबति मूषकः नमति शुनकः उपविशति शुकः वदति शिक्षकः लिखति बालकः खेलति अश्वः पश्यति मर्कटः उत्पतति छात्रः उत्तिष्ठति गिरीशः गायति. Now let us see the next. भाषाभ्यासः चित्रं दृष्ट्वा वाक्यं लिखत. छात्रः लिखति मूषकः खादति गजः चलति मर्कटः उत्पतति. उत्तमम्. द्विपूर्णांक द्वि एषा सा एषा नीलिमा एषा means this for the girl. So
This is Nilima. Esha Gayati. She sings. Ka Gayati. Who sings? Esha Nilima Gayati. This Nilima sings. Sa Swati. Sa means that. So that is Swati. Sa Nrutyati. She dances. Ka Nrutyati. Who dances? Sa Swati Nrutyati. That Swati dances. Krutihi. Activity. छात्रः स्वसमीपे दूरे उपविष्टस्य मित्रस्य विषये वाक्यं वदति. Student speak some sentences. The one who is sitting with near, that is swaswamipe, and the dure, the far, of his friend, of her friend. So let us see. Likewise, एषः सुभाषः उपविशति. सः संकेतः हसति. एषा नीता लिखति. सा सुवर्णा चलति. Now see the meaning of this sentence. एषः सुभाषः उपविशति means this Subhash is sitting. सः संकेतः हसति. That Sanket is laughing. एषा नीता लिखति. This Neeta writing. सा सुवर्णा चलति. That Suvarna is walking. Manjushayaha सायेन वाक्यानि रचयत. Now there is the three box. The one is the pullinga, the another is the strilingi, and the kriyapada. Now pay attention. Here you have to make sentences with the help of these words. So let us make sentences. हरिणः भ्रमति. गायकः गायति. नृपः आगच्छति. सः चलति. एषः गच्छति. कः पश्यति. अमितः उत्तिष्ठति. Now you can say कः पश्यति or कः पतति. The both are right. अमितः उत्तिष्ठति. कपोतः खादति. मार्जारः पीबति. शुकः उपविशति. सिंहः गर्जति. चटका भ्रमति. पिपीलिका खादति. बालिका हसति. विद्यार्थिनी नमति. महिला चलति. मक्षिका खादति. गीता तिष्ठति. नदी वहति. सा वसति. एषा गायति. का पश्यति. Now this is the question. श्रेया क्षिपति. शिक्षिका कथयति. Now let us see the next. भाषाभ्यासः. चित्रं दृष्ट्वा वाक्यं लिखत. बालिका हसति. महिला चलति. शिक्षिका कथयति. पिपीलिका खादति. Now पिपीलिका means ant. एतत् तत्. एतत् फलम्. एतत् means this. This is fruit. एतत् पतति. It falls. किं पतति. What falls. एतत् फलं पतति. This fruit falls. तत् कमलं. That is lotus. तत् विकसति. It blooms. किं विकसति. What blooms. तत् कमलं विकसति. That lotus blooms. Now this is the नपुंसकलिङ्गी शब्द. कृति क्रियापदं योजयित्वा छात्राः वाक्यानि वदन्ति. व्यजनं चलति. अपत्यं हसति. जलं वहति. रेलयानं धावति. शिक्षकः एकैकं शब्दं वदति. शब्दस्य लिङ्गं ज्ञात्वा छात्राः क्रियां कुर्वन्ति. शिक्षक एक एक शब्द बोलेंगे और वो शब्द का लिंग जानकर आपको वह क्रिया करनी है, परंतु हम यहाँ पर वह शब्द वो लिंग के बॉक्स में डालेंगे. अगर पुल्लिंगी होगा तो पुल्लिंग बॉक्स में जाएगा, स्त्रीलिंगी होगा तो स्त्रीलिंगी के बॉक्स में जाएगा, और नपुंसकलिंग शब्द होगा तो नपुंसकलिंग शब्द के बॉक्स में जाएगा.
सो आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, यथा यदि पुल्लिंगी शब्द पुल्लिंग शब्दः तर्हि छात्रा हस्तम उपरि कुर्वन्ति। अगर वो पुल्लिंगी शब्द है तो छात्र हाथ ऊपर करेंगे। अगर स्त्रीलिंगी शब्द है तरी तालिका वादनम, अगर स्त्रीलिंगी शब्द है तो ताली बजाएंगे। और नपुंसकलिंग शब्द है तरी ओम इति शब्द ध्वनि ही करोति, अगर नपुंसकलिंगी शब्द है तो ओम यह ध्वनि करना है, आवाज करना है। शब्द अस्ति अश्वः। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कोई भी शब्द के अंत में विसर्ग होता है, जैसे अश्वः है तो वो पुल्लिंगी शब्द है। अगर वो शब्द आ है, जैसे रुद्धा, पेटिका, स्थालिका आ है, तो वो स्त्रीलिंगी शब्द। और कोई भी शब्द के अंत में म और त हलंत होता है तो वो नपुंसकलिंगी शब्द है। जैसे अश्वः पुल्लिंगः शब्द, वृद्धा स्त्रीलिंग शब्द, पर्णम नपुंसकलिंग शब्द, वृक्षः पुल्लिंग शब्द, एषः पुल्लिंग शब्द, पेटिका स्त्रीलिंग शब्द, गगनम नपुंसकलिंग शब्द, हस्तः पुल्लिंग शब्द, सा स्त्रीलिंग शब्द, चषकः पुल्लिंग शब्द, कूपी स्त्रीलिंग शब्द, तत् नपुंसकलिंग शब्द, वनम नपुंसकलिंगी शब्द, पात्रम नपुंसकलिंगी शब्द, नदी स्त्रीलिंगी शब्द, एषा स्त्रीलिंग शब्द, स्थालिका स्त्रीलिंग शब्द, फलम नपुंसकलिंग शब्द, यानम नपुंसकलिंग शब्द, पुरुषः पुल्लिंग शब्द, एतत् नपुंसकलिंग शब्द, उदरम नपुंसकलिंग शब्द। Now let us see the next. योग्य स्तंभेषु शब्दान लिखत। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए शब्द के बॉक्स के अंदर, आपको वह स सा तत्, पुल्लिंग रहेगा तो सह, स्त्रीलिंग शब्द रहेगा तो सा, और नपुंसकलिंगी शब्द रहेगा तो तद में डालना है। सो सह मीन्स चंद्र सह, लता सा, पत्र तद, दुग्धम तद, पादरक्षा सा, अश्वः सह, विमानम तद, शाटिका सा, वृद्धः सह, पेटिका सा, गृहम तद। प्रश्न निर्माणम कुरुत यथा मृगः धावति। प्रश्न निर्माण करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। अगर पुल्लिंग है तो कह, स्त्रीलिंग है तो का, और नपुंसकलिंग है तो किम। सो मृगः यह पुल्लिंग है तो कह धावति। छात्रः लिखति, छात्रः पुल्लिंग है तो कह लिखति। फलम नपुंसकलिंग है, फलम पतति, फलम नपुंसकलिंगी शब्द है तो किम पतति। बालिका गायति, बालिका अकारांत शब्द है तो का गायति। मर्कटः खादति, कह खादति। एषा पश्यति, का पश्यति। एषा स्त्रीलिंग है तो का पश्यति। So student, I hope you have understood this explanation. To revise by watching again and again this video, you will definitely understood this video. So if you like this video, please subscribe the Sanskrit Express channel. Happy learning. धन्यवादः।